जय श्री माता जी। अभी हम सब लोग दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। विल ब्रिंग बोथ आवर palms towards श्री माता जी। We will look at श्री माता जी। श्री माता जी के फोटो को निहारते रहेंगे। दोनों हाथों में महसूस करते रहेंगे। We'll observe the vibrations in both our palms. आहिस्ता आहिस्ता हम आंख बंद करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके आप हमारे हृदय में पधारिए। माँ कृपा करके आप आपके पावन चरणों को हमारे हृदय में रख दीजिए और हमारे हृदय को आपके निवास योग्य बनाइए। श्री माता जी, प्लीज कम इन आवर हार्ट, प्लीज पुट योर लोटस फीट इन आवर हार्ट, प्लीज मेक आवर हार्ट वर्दी ऑफ होस्टिंग यू। Let us clean our heart so that you are there. अभी आंखें बंद करने के बाद श्री माता जी को महसूस करेंगे, अपने तालु भाव को महसूस करेंगे और अपना सेंटर हार्ट को महसूस करेंगे और दोनों हाथों में क्या हो रहा है महसूस करेंगे। After closing our eyes, we'll observe our will will look we will have attention on Shri Mataji, attention on the Brahmarandra, attention on the center heart, and observe what's happening in both our palms. Yes, Mataji. Now with these vibrations, we'll bow down to Shri Mataji, then raise our kundan and take bandhan. ये vibrations लिए नतमस्तक होकर श्री माता के वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। Slowly, आहिस्ता आहिस्ता। दोनों हाथ धरती माँ पे। We'll put both our palms on Mother Earth. ओ धरती माँ, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, हम आप पे पैर रख के चल रहे हैं। Oh Mother Earth, please forgive us that we've been insensitive to your love. Please remove all the imbalances in our chakras and nadis. And please bless us with immense patience and tolerance as we get into meditation. वो धरती माँ, हमारे अंदर जो भी असंतुलन है कृपा करके अपने में खींच लीजिए। तालु बाग से महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में क्या हो रहा है। We'll observe from top of it what's happening in both our palms.
अभी अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, राइट हैंड रखती माँ पे, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। अपना तालु भाग से महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है और राइट हैंड में क्या हो रहा है। We'll observe from top of head what's happening on our left palm and what's happening on our right palm as we pray. श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे धरती में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी प्लीज रिमूव ऑल द imbalances in our ईड़ा नाड़ी and give it to Mother Earth. अभी से जो भी प्रक्रिया करेंगे हम पूरी तरह दृष्टि अंदर रख के करेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। From now onwards, whatever we do, we will do with attention completely inside and will not open our eyes. अभी अपना राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। Here we'll ask Shri Mataji, please remove all the future planning heat from our Pingla Nadi and give it to ether, the sky element. माताजी कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है उसे आकाश में विलीन कर दीजिए माँ। और हम महसूस करते रहेंगे अपने तालु बाग से कि लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, राइट हैंड में क्या हो रहा है। From top of our head, we'll continue to observe what's happening on our left hand and what's happening in our right palm. अभी अपने दोनों हाथ अपने गोद में ले आएंगे। Now we'll bring both our palms onto our lap. अभी अपना लेफ्ट हैंड को लिवर पे रखेंगे। We'll put our left hand on the liver.
ये एफर्टलेस मेडिटेशन है। Is effortless meditation. So we'll just observe what's happening on right palm, what's happening in the place where we put our hand. हम महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है और जहां हाथ रखा वहां लिवर पे क्या हो रहा है। जय माता जी, अभी देखेंगे चित्त पूरी तरह अंदर जा रहा है कि नहीं। You will observe if our attention is nicely going inside and if our liver is getting और लिवर ठंडा हो रहा है कि नहीं। अभी लेफ्ट हैंड माता जी और राइट हैंड हृदय पर ऑन द लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स माता जी, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हार्ट। फिर महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है और जहां हाथ रखा वहां क्या हो रहा है। We'll observe what's happening on our left palm and what's happening where we put our right palm. जय श्री माता जी, अभी दोनों हाथ अपने गोद में ले आएंगे। We'll take our right hand 2 inches above the head. अपना राइट हैंड को सर इंच ऊपर ले जाएंगे और महसूस करेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्म रंध्र अच्छी तरह खुल रहा है कि नहीं। With right hand 2 inches above the head, you'll observe if we are getting vibrations nicely and if the brahma randhra is nicely opening up. Now leaving our attention there, we'll bring our right hand down. We'll take our left hand 2 inches above the head. चित वहां छोड़ के अपना लेफ्ट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर ले जाएंगे। जय श्री माता जी, चित को वहां छोड़ के दोनों हाथ अपने गोद में ले आएंगे। Leaving our attention on top of our head, we'll bring both our palms down. And now for everything else, now we'll observe from top of our head what's happening in both our palms.
अभी चित्त सहस्रार के ऊपर है, वहां से ही महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में क्या हो रहा है. Now our attention fully inside. अभी यहां से हम पूरी चित्त अंदर ही रखेंगे. अभी चित्त यहाँ ऐसे रखे हुए हम शिव माता जी का स्पीच सुनेंगे. In this state of attention fully inside, observing from top of our head or both palms, we will listen to Shiva Mataji's speech. Like a birthday of Shiva, you can say, or something. How can it be? Because he's eternal. He's all the time there. So, what demarcates today's celebration is the establishment of Shiva on this earth. In the material sense, every matter has been created with a deity, and that deity is established in that matter, as you know. So when it was thought by Adi Shakti that first we must establish Shiva. Without Shiva, you cannot establish him. First he is to be established, because he is the absolute. So you have to establish Shiva. And now what should we do? How to establish him? He is the God of Tamoguna. He is the cold. He is the God of all that is not active. So first of all, this earth, when it receded from the sun, which was very hot, was taken very near to the moon. The moon is the brother-in-law of Shiva. So it was taken so close to moon that the whole earth got covered with ice. And it was then gradually moved towards the sun. When it was moved towards the sun gradually, then it started melting. And the point that did not melt at all was the point where Shiva was to be established. That was predestined, that spot. And that spot is the Kailash. The ice never melts. And if you see, the whole mountain is like the face of Shiva. The eyes, the nose and everything you can see clearly jetting out. And all the year round it keeps its shape. And that is how Shiva was created. And he was placed in a witness state as the spectator of all that happens on this earth, facing towards the Kundalini of the universe, which they were going to place in India. So he is facing towards the south. He is looking at the south with both the hands like this, like a spectator watching the spectacle of the Adi Kundalini. That is how Shiva was created. So, though we say that the heart of the universe is England, still Shiva resides on top of this earth. This is the thing.
Like you have got the seat of Shiva on top of your head, but he resides in your heart. In the same way, Shiva belongs to this place. And he looks at the whole body from this point. So the feet are the south, this is the north, this is the east, west, and this is the east. That is how we can see the whole map of the universe or the world that is. So now, Mr. Better, sit down. Don't stand up. Listen to my lecture now, don't take photographs. You must listen to my lecture attentively. In a meditative way, you must listen to me. You must make full use of me, isn't it? You should be meditative. Then you can hear me very clearly. You don't have to bother. You have to be meditative. So this is south. So you are facing towards the south as a witness. Just now somebody told me that in the south people put their head towards the south and put their feet towards the north. I mean, imagine. The feet are put towards Shiva, who is on the north. Kailasha is in the north, isn't it? It is not in the south. So why put your feet towards the north? I mean, one must use logic. These Brahmins have told you all these stories and you are doing just the opposite. That should not be done. Sometimes I feel God save this country from Brahmins. They are everywhere now. They are our rulers, they are everywhere. And they have no idea what Brahma is. If they are real Brahmins, I am sure one day the real Brahmins will be in charge of this country. So now, when we understand that Shiva is the first thing that is established in the matter, then in us also first the Shiva is established. When the fetus takes its form, the throb in the heart is the establishment of Shiva. That is the sign that Shiva has been established. In case of people who are born with bad heart or with trouble, one has to say that Shiva is not fully established. Not that they are bad people, but they are not supposed to live for long and have to have another heart later on maybe, or that there might be some sort of a problem in their previous lives, and if they pay attention to Shiva Tattva, their heart can be cured. So the most important organ in the body is the heart. If the heart fails, you cannot remain. So the most important thing is to look after your Shiva principle, which is the earth. We are worried about every sort of mundane thing. Worried about this, worried about that. But we are not worried about our spirit. This is the biggest problems with us. If you worry about your spirit, if you pay attention to your spirit, the whole universe then vibrates with Parabrahma, which is nothing but joy. So without any attention to spirit, if you think we can enjoy life, you cannot. You cannot enjoy your life if you pay attention to other nonsensical things and you do not pay attention to your spirit.
The complete silence comes into us only through spirit. If a spirit is awakened within us, this silence starts working and you feel extremely relaxed and absolutely one with yourself. There is no problem. You don't seek other things that normally people seek. You seek your own company and you want to be some time with yourself. Only thing that you seek after finding your spirit is the company of other Sahajogis who also have found the spirit. So there's a rapport established between spirit that is in the heart. And this spirit is the universal being within us, about which I have told you, that once you become one with the spirit, you automatically become universally conscious. There are so many qualities of the Shiva Tattva, of the principle of Shiva, that I need not tell you. But today I will tell you another dimension which I have not touched so far about Shiva Tattva. The physical aspect of Shiva Tattva is that such a person is a cold type of a person. In the sense that such a person is not a person who gives hot vibrations, but who has too much of it sometimes, not in balance, who overdoes it, develops a kind of a temperament which can be extremely cold. Could be low blood pressure with it, could be diarrhea also one can get with too much of spiritual strength. And also could be on the plump side because of the left side. Because left side is the kapha, as you call it. Kapha is the phlegm that is more. Because the left side is more, such a person is always apt to catch cold and has problems of the pores. So such a person has to protect oneself from getting into colds and things like that, and the methods to be employed are to be learned through Sahaja. But to give it a balance, the spirit itself is beyond health problems. But the left-sided person who always thinks of the spirit also can become one-sided when he has to live on this earth. He has to be a balanced person. So he has to take to another side, and that side is the activity of the spiritual growth within himself. A person who is very spiritually developed cannot exist as a Shiva Tattva on this earth. He has to exist as a balanced personality. And when he starts developing that balancing within himself, the spirit from his heart starts rising and goes on top of his head. So this is the second stage where one has to be. Here is the whole collectivity. So when you start taking your love and affection into your central nervous system, you can say, and put it on top of your head. That means as soon as you put it in your Virat, when it starts spreading through your Virata Shakti, through your collective being, then only you are a complete person. Otherwise you are a Shiva Tattva. Shiva Tattva exists whether this universe exists or not. It exists even when the whole universe is existing, even when it vanishes, it all goes into that, merges into that Shiva Tattva. So a person who has a spiritual hankering must know that to raise your Shiva above the heart level, he has to raise it gradually onto a very detached method of existing on top of the surface, where there is a complete balance.
complete balance. Many people I have seen in Sahaja Yoga are extremely loving, nice, very sweet persons. Like in Delhi, I would say people are not so harsh as in Bombay. Bombay people could be harsh, Pune people are little harsher. But Bombay and Pune people are deep. The reason is they have balanced themselves a little. And they have gone above their heart feelings like sympathy. Don't be unkind to somebody, don't say anything harsh to somebody. Can be very, very funny also sometimes. Like yesterday I was sleeping in the place where you always sleep. Now if I was in any Bombay or Pune center, anywhere, you can't hear any voice, anywhere, nothing. Like a lion, you see. Like a tiger is in a forest, nobody will hear your voice. If there's a tiger, you can know for miles together there's a tiger somewhere. It's so sad. But if I am in Delhi, then everybody's talking. Somebody was talking about money, this, that. The whole time the jabbering was, even the Sahaja Yogis from foreign had become Delhi Sahaja. They were all talking so much, I was surprised. How did they take to this talking so much there? All were talking jagar jagar. On the contrary, if I am sleeping there, you all should have been in meditation, sitting down and doing meditation. Instead of that, everybody was busy with all the possible nonsensical topics as if they have no other chance to talk. And they were all jabbering, jab, 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 jab. I didn't know what to say and I didn't know what to explain. But this is what one has to know, that unless and until you raise your sympathetic attitude, like you tell somebody something, I have had such a problem in this business, say example, like, I mean what a topic, but it doesn't matter. If you start, I had a problem in this one, another one, yes, I too had, see the sympathy. I too had such a problem, these people are so bad, that happened, we had the same problem, same talk. They are all, talking about things which are irrelevant to Sahaja Yoga. Even relevant to Sahaja Yoga, you should not talk when I am there. I have to make humble request to all of you that the way you people sometimes behave is not good and is not congenial to Sahaja Yoga. Even to keep your mouth open in my front is not a good thing. And I don't want to tell you in such details, but it is so many things are there that you have to learn before you raise your Shiva Tattva from your heart. You are good at pleasing people, of organizing, you are excellent, you organize very well, there are no quarrels. Sahaja Yogis in Bombay quarrel quite a lot, and even Pune Sahaja Yogis are quarrels. But I must say Pune Sahaja Yogis are very deep and Bombay Sahaja Yogis are very deep. Individually they have achieved something. Now they have to go further than that, is to go a little bit in the heart again. You see, the second descent they have to feel more that way, because that way they are very, very strict with people. But you see, certain amount of strictness is to be accepted. For example, if somebody is told, don't touch mother's feet, one feels very bad. But this is a very mundane sort of an understanding of the mother. If she says, don't touch my feet, that's what you are supposed to do. You have to do exactly what will please me and not what will please you. So you must change your attention for pleasing all the public. Some people say, those who come first time, mother, we must not say this. You must. Certain thing you must say to them. Otherwise, you will make me aprasanna. That will cause problem. But when you say to others, you need not go like Pune and Bombay people in their special Marathi language, but say it in a proper Urdu style, that people don't feel bad, but you must say it. You should not put those people on my head. Instead of that, you should tell them in such a way that people are all. So to go deeper into you must do also individual meditation and samuhik. I would not say all the Sahaja Yogis in Delhi are like that, but
We are very good at organizing. Which our Bombay Sahajogis and these Pune Sahajogis must learn. They quarrel among themselves and I really get fed up. And they treat each other shabbily, that I don't like. But individually they are alright. So they become individualistic. Some people become individualistic and some people become publicist. They please the public. Now they are twisted. What should a Sahajogi do? They have to become mother addicts. They should do what your mother likes. Do you understand? Need not please the public or need not please the individual, but do what your mother will like. That's a very simple thing which Adi Shankaracharya has told you, that just keep the mother free. But nobody makes that study. Try to make the study what makes mother free. Then you will see, I am very easily pleased. You see, as a Shiva Tattva, even if you make mistakes, twice you pull your ears, all right. But don't go too far. You see, the mistakes you commit is all right, but don't take it for granted that you can go on committing mistakes, because you will get a big rope, but you will hang yourself ultimately, isn't it? So be afraid of the rope also which is given to you. It will hang you much better otherwise. So one has to understand that you should not be addicted to public opinion or to the opinion of your own. Both things are wrong. You must behave in such a manner that it should please all the deities within me. As far as I am concerned, I don't exist. I have no existence. Really, believe me, I have no existence at all. I just is an assemblage of so many existences. Otherwise, I don't exist. I don't find myself anywhere in this body, anywhere. I don't find myself anywhere in the universe. I am nowhere. I sometimes find, what is all this? It's not mine. It's all foreign to me. But still I permeate into it, enjoy it, live with it. But I am not in it, nowhere. So if you just try to understand what pleases your mother, you will develop your dignity because I want you to be dignified. It will develop your joy because I want you to be joyous. It will give you more capacity to achieve more vibrations within yourself, because that is what I am doing. Whatever is good for you, if you do that, it will please. So what I think is good for you, you may not think. You may have your own ideas, individualistic again, or maybe public-wise. Like I have told you that please don't arrange my program before 7 o'clock in the evening. Now you may say it won't suit our public. Doesn't matter. It doesn't suit me. That's the main point. Because I have certain timings when only I can really be very good. That time I have to give to somebody else. It's fixed. So you don't fix my timings according to yours. Morning time before 11 o'clock, no program should be fixed. Early in the morning if you fix at 5, I don't mind. I have certain timings which I have to use for some other purpose. So you have to understand that whatever suits me should be done, because that is for your good also. Because there I am most beneficial. I am just telling you my own tricks so that you take more advantage of it. But they insist on that the people who are going to the office won't be able to come. Such people should not come at all. If there is a picture at 7 o'clock, they will go at that picture or not. Then why should you make your mother so cheap that it should suit their convenience? If there are few people, it is even better for us. We'll have better accommodation in the kingdom of God. So don't make me cheap.
that one should understand not to cheapen me. Keeping the dignity of your mother, whatever is to be achieved, I agree that all the brothers and sisters must be helped, all the public must be helped, but we can't get rid of the kachras otherwise, you see. There are lots of things which are to be just thrown away. So we should not worry about the kachra part. Whatever is the best we'll have. But to have that also one should not speak harshly. Again I will say not to use harsh words. The way people get out, like that one should not talk. Change your language. You must educate yourself how to talk to people in a soft way, in a proper. That is very important for Sahaja Yoga. Because if you go on insulting, maybe you might insult some saint. So you should not do in that way. Understand it. And try to make your individual being so capable that when you go to the public, you are able to put the right perspective, right concept, the right conduct, the right behavior, and the right knowledge. Here I do not mean right rationally, right which is absolute. Shiva is the absolute. He is the giver of absolute knowledge. He knows what pleases me. The moment something will happen that will really displease me, he will shut the door. He is just watching this to please me. The moment he'll find that this is not working out, he'll stop the whole show and he'll say, shut it. Finish. So though I may say the spectator is Shiva, but he is just a judge and he sees those things. So try to be alright. A nice spectacle I try to make. To please Shiva so he continues to be there, and this let universe be a nice playful thing in which you rise and attain that eternal life which is promised. But one has to understand what is this. Some people have a habit of just looking at me straight all the time. It's not the way to be done. Put your eyes down all the time. Just you cannot stare at me. It's stupid. Apart from stupidity, it will not please me. Will it please you if I start staring at you all the time? I don't stare at you. I try to please you by doing all kinds of things. Why don't you learn some things from me, how I try to please? You can't do all these things, of course. I know. Because somebody says, Mother, we went there, a horse was given to us, this, that. This you cannot achieve yourself for me. See? If I have a difficulty, you can't solve my difficulty. Isn't it? But I can solve your difficulty. So I can please you very easily because I have so many methods of pleasing you. So whatever methods are there, by which one should not positively displease. That's the only thing. You don't do anything special, but don't do something extraordinary just to displease. If you understand this simple thing, that don't try to do anything that will displease, you please me. It is so simple. You don't have to do anything extra. Just try to be loving, affectionate, dignified, and I'll be very happy with all that. As it is, I'm overjoyed. I'm very happy. But I have to tell you what one has to achieve and how one has to know about this thing. So it is necessary now for Delhi people to rise from the heart to the Sahasrara. And it is necessary for Bombay and Pune people to go from heart to go from the Sahasrara to the heart. I would say Rauri people are in between. Rauri people are in between. They are very good organizers and they don't create problem for me as far as individuals are concerned. So I think Rauri is a place, perhaps maybe it is my car, that it is so good whatever it is.
But we all can do that. We all can change and inform each other and improve and educate us. All this education can come to us if we really love ourselves and care for our evolution. We don't have to bother about it much if we really care. Gradually all these things will work out and the balance can be established. Those people who talk too much should not talk so much. What I feel that when you talk too much, when you stop, you just stop. It's in between. When it is necessary, you must talk. When it is not necessary, you should not talk. So that kind of personality gradually you can develop in Sahaja Yoga. That you will develop that wisdom, how far to go, how far not to go. Not to go is the quality of Shiva. He doesn't do anything. He's just sitting down there and watching the whole show. He doesn't do anything. But still, he is the one who has to watch. If he doesn't watch, then the whole show is over. If you understand that in not doing anything, how much he is doing, see the contrast. He is doing nothing as such, but he is making everybody dance to please him. In the same way, in one shot you have both the nature. As Sahaja Yogi, you can achieve that kind of a balanced personality. It is for your good, for your evolution, for your development. So today all of you have a great chance of evolving individually within yourself this Shiva Tattva, which ultimately permeates into the whole. Kabira has said it in a beautiful couplet. I don't know if you people have understood. It is Mana mamata ko thira kar launga. The compassion of my heart I will vibrate. I will bring it out. The compassion of my heart I will vibrate. I bring it out of Pancho Tattva milaunga and put it into the 5 elements. See Kabira, you follow him, how great he is. People talk of Kabir Das. See, he says that take it out of the heart and put it into all the 5 elements. This is what is Sahaja. If you understand that, then you don't have to understand anything. You have got it in your heart, become the capitalist in your heart and become a communist outside. If you can achieve this balance properly, you have done it. And we can do it. We all of us put together, we will do it, we can achieve. And we can show to the world that everyone can achieve. All ordinary human beings, so-called, we can become extraordinary. So today we have to decide about ourselves that we are going to do it, we are going to be educated about it in a spiritual way, in a Sahaja way. And every moment, if you watch yourself, you can. And not to explain yourself. Or to say, oh, this happens to me and that happens to me. That's not the point. Many people tell me like that. That's absurd. You challenge yourself, how can it happen to you? Why don't you do it? You should do it. Why can't you do it? Like that you take yourself to task and you can work it out, I'm sure, because you have got the power. I bless you all for your spiritual development and for your collectivity. Both things must be looked at. If you have spiritual development and no collectivity, it is useless. If you have collectivity and spiritual development, none, it is useless. Combine it properly. So we have to take Shiva and establish him into the Virat. This is what we have to do. And if you understand this point, your relationships with others also will be good, permanent, of a very substantial nature. And the quality of Sahaja Yogi's life will be something very, very great. May God bless you.
जय श्री माता जी। अभी हम अपना कुंडली माँ किधर है देखेंगे। वी विल ऑब्जर्व वेयर आवर मदर कुंडली इज। जैसे ही कुंडली माँ को देखना है हम महसूस करेंगे तो चित्त ऑटोमेटिकली सर के ऊपर चला गया कलेक्टिवली। अभी वहीं से ही हम अपने दोनों हाथों को महसूस करेंगे, अपनी पूरी सटल सिस्टम को महसूस करेंगे और वहीं से ही ध्यान में रहेंगे, क्योंकि वहां से ही शिव जी की पूरी सटल सिस्टम को देखते रहते हैं। So now that our attention is nicely settled above the Sahasrara, 2 inches above the Sahasrara, from where Shiva looks at our subtle system. So we will look through Lord Shiva's eyes at our subtle system and stay in meditation. अभी थोड़ी देर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। माँ मदर कुंडली वेर आर यू, तो हम देखेंगे मदर अपनी कुंडली माँ किधर है। जब भी हमको लगता है कि कुंडली माँ नीचे आ गई, हम जस्ट पूछेंगे अपने आप से, कुंडली माँ आप कहाँ हो, मदर कुंडली वेर आर यू। जैसे ही हम पूछते हैं तो चित्त अंदर चला जाता है और सर के ऊपर शिव जी की जगह पे। अगर हाथ से मेजर करना है तो बस हाथ ऊपर रखेंगे सर के 2 इंच ऊपर, तो कुंडली माँ उधर आ जाएगी और चित्त उधर चला जाएगा पूरी तरह सर के ऊपर जहाँ शिव जी रहते हैं। If our attention is not going inside, we can just put our right hand 2 inches above the head and automatically attention goes and settles there, from where Shivji actually looks at our subtle system. With right hand we check, then with left hand we check again. Now bring back our hands down. दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, फिर वहीं से ही पूरी subtle system को महसूस करते रहेंगे।
जैसे ही वहां से देखते रहेंगे बहुत अच्छी तरह सहस्रार खुलेगा. If we continue to observe from there, the Sahasrara will open nicely. We'll stay there. Let the Sahasrara bloom for some time. वही रहते हुए सहस्रार की पूरी तरह खुलने देंगे. हे श्री माता जी. शिव जी कैलाश में रहते हैं. उनकी ठंडक वहां ज्यादा महसूस होती है. So शिव जी lives in Kailash where the ice never melts. So the more we spend 2 inches above Sahasrara, 4 inches above Sahasrara, the cooler the Sahasrara. And from there we observe both our palms, cooler the palms. But we'll have to continue to practice. हम जितना देर ऊपर रहेंगे, 2 इंच ऊपर, 4 इंच ऊपर, वहां से ही अपने सहस्रार को महसूस करते रहेंगे. तो जैसे कैलाश में बर्फ पिघलता नहीं है, वैसे ही अपना सहस्रार और ठंडा होता जाएगा. जैसे शिव जी स्थापित होते रहेंगे, सहस्रार ठंडा होता जाएगा. और वहां से ही जब हम अपने हाथों को महसूस करेंगे तो शिव जी महसूस करते हैं और अपने हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते जाएंगे. मगर इसके लिए हम आज पूरा दिन पूजा से पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको. From there, all our 72,000 nerves can get cooler. वहां से ही अपने 72,000 नाड़ियां ठंडी हो सकती हैं.
और जैसा बर्फ पिघलता है वैसा ठंडक नसों में चलती रहती है. And as we stay more on top of the head, the coolness will slowly drench the nervous system. जैसे सहस्रार में फैलते जाएंगे तो शिव जी अपना हृदय से आके विराट में बस जाएंगे. We will let Lord Shiva settle nicely in our Virat. जैसे माँ ने स्पीच में बोला, माँ के समक्ष में हमको सिर्फ साइलेंट रहना है. In mother's presence, we just have to be silent. अभी फिर से देखिए, अगर जब भी कुंडलनी नीचे आ रही है हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मदर कुंडलनी, आप कहाँ हो? कुंडलनी माँ आप कहाँ हो? बस हम जैसे ही खोजेंगे माँ को, आहिस्ता आहिस्ता वो सर के ऊपर चले जाएंगे एंड चित्त भी उधर चला जाएगा. अगर नहीं जा रहा तो हाथ फिर से रख के हम फिर से महसूस कर सकते हैं. We'll put our right hand 2 to 3 inches above the head and again observe that. फिर से राइट हैंड नीचे ले आएंगे, फिर लेफ्ट हैंड सर के 2-3 इंच ऊपर. Put our left hand 2 to 3 inches above the head and again observe the Kundalini Mother is there up there. Leave our attention there. Bring our hand in. फिर से हाथ नीचे ले आए और फिर से हम महसूस करते रहेंगे. शिव जी ऐसे स्थापित होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता. Slowly we'll let Lord Shiva settle there.
जैसा कोई ठंडा सूर्य सर के ऊपर पूरा ठंडा रोशनी और ठंडा कर रहा है, वैसे शिव जी अपने पूरे नसों को ठंडे कर देते हैं। Like as if there is a cool sun above the head, and from Shrimata ji that sun is drenching us along the nerves from top of the head and downwards. We will remain in that state to get drenched. वो स्थिति में रहेंगे ताकि वो पूरी रोशनी, ठंडी रोशनी पूरा बदन को चेतन में नहला दे। We'll slowly let this cool vibrations absorb us into Shrimata ji. Shrimata ji, हमारी एक ही इच्छा आपके साथ एकाकार। Shrimata ji, our only desire is oneness with you. Please slowly absorb us into your divine self. Shrimata ji, कृपा करके हमें आप में लीन कर लीजिए माँ।
नो एफर्ट, लेट मदर अब्सॉर्ब अस। कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, बस माँ में लीन होते जाएंगे। अगर कभी भी चित्त नीचे आ रहा है, फिर से माँ, मदर कुंडली वेयर आर यू। फिर माँ कुंडली माँ आप कहाँ हो, जैसे ही पूछेंगे अंदर चले जाएंगे और सर के ऊपर अगर वहां है नहीं तो फिर से हाथ ऊपर रख के फिर से महसूस करेंगे। राइट हैंड से थोड़ी देर, फिर लेफ्ट हैंड से थोड़ी देर। जैसे चित्त वहां रह गया, फिर से माँ टेक ओवर कर लेंगे। शिव जी विल टेक ओवर। We will let Lord Shiva nicely settle above the top of the head, 2 to 3 inches above the head. आज पूरी तरह शिव जी को स्थापित कर लेंगे सर के 2 इंच पर। Let's continue to dissolve into this cosmic silence. अभी जैसा है कि जैसे आंखने के ऊपर कुछ है नहीं, अगर नाक के ऊपर कुछ है नहीं। I feel as if there is nothing above my nose. It's like engrossed in Shiva Mata Ji, पूरी तरह माँ के अंदर। जैसा कोई ठंडा सा सूर्य माँ से आ रहा है और पूरा मस्तिष्क को अपने आप में खींच रहा है। It's like a very big, huge, cool sun from top of her head, from Shiva Mata Ji, and absorbing the top of the head into her. जब भी चित्त भटक रहा है फिर से पूछेंगे माँ, मदर कुंडली वेयर आर यू। कुंडली माँ आप कहाँ हो। जैसे उनको ढूंढने लगेंगे वो ऑटोमेटिकली सर के ऊपर आ रहे हैं। As we are searching for her, she's automatically coming on top of the head. And if you're not able to feel on top of the head, again take our right hand, put it 2 to 3 inches on top of the head and feel the vibrations. अगर महसूस नहीं हो रहा है, फिर से राइट हैंड सर के ऊपर ले जाएंगे, महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस को और चित्त को, और ये प्रकाश चित्त को आनंद लेते रहेंगे।
We'll bring our right hand down. फिर से left hand को भी देखेंगे. We'll take our left hand on top of the head. Again, observe. The attention is nice, still there. Kundalini mother is there. Vibrations are coming there. Leave our attention there and bring back both our palms down again. चितवाई छोड़ के फिर से दोनों हाथ नीचे रहेंगे. फिर से माँ में लीन हो जाएंगे. Again, we'll continue to get dissolved into Shiva Mataji, the huge sun that is there above, that's absorbing the whole of Sahasrara. ठंडा से ठंडा सूर्य का गोला जैसे अपने सहस्रार को अपने में खींच रहा है. कोई प्रयत्न नहीं करेंगे. We will not put any effort. We will let the Sahasrara dissolve into this huge sun. अपने सहस्रार को ये huge, ये बड़ा सा जो सूर्य है उसमें मिलने देंगे. कोशिश बिल्कुल नहीं. नो एफर्ट. बस हम अपना मस्तिष्क में महसूस करते रहेंगे. We'll continue to observe our brain, the nerves. हम अपना मस्तिष्क में नसों को महसूस करते रहेंगे जैसे वो माता जी कृपा करके हमें आप में लीन कर लीजिए माँ. या आपके आनंद में लीन कर लीजिए माँ. श्री माता जी प्लीज absorb us into you. Please absorb us into your joy.
अभी ये पूरी तरह खुले हुए सहस्रार से अपने दोनों हाथों को महसूस करेंगे. With this fully dissolved Sahasrara in mother, from there we'll observe the both palms. And that is the best way to cleanse our Ida and Pingala. With fully open Sahasrara, we'll observe the Ida and Pingala in both our palms. ये पूरी तरह खुले हुए सहस्रार से अपने दोनों हाथों के सहस्रार को महसूस करेंगे. और ये सबसे अच्छा तरीका है अपना ईड़ा और पिंगला को स्वच्छ करने में. विशुद्धि तक पूरा सहस्रारा में सिर पूरा माँ के अंदर ये जो बड़ा सा गोल है उसमें चला गया है. You can feel, I can feel the whole head till Vishuddhi absorbed into this huge sun. As we are observing more, both our palms, जैसे दोनों हाथ को ज्यादा महसूस कर रहे हैं, ये पूरा सिर विशुद्धि तक माँ में लीन हो गया है. खुले हुए सहस्त्रार से दोनों हाथों को महसूस करना सबसे अच्छी तरीका है जिससे ईड़ा पिंगला दोनों स्वच्छ हो जाएंगे. We'll continue to observe from top of the head with this open Sahasrara, both our palms, so that the light of the spirit cleanses both our Ida and Pingala.
आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, विल नॉट ओपन आवर आइज एट ऑल. विल लेट आवर सहस्रारा, आवर विशुद्धि, आवर हार्ट डिसॉल्व इनटू श्री माता जी. अपना पूरा सिर विशुद्धि अनाहत तक पूरी तरह माँ में लीन होने देंगे. We will let our whole head Vishuddhi up till Anahat dissolve into Shri Mataji. As we continue to observe with this open Sahasrara, both our palms. अपनी पूरी सहस्रार विशुद्धि और अनाहत तक पूरी तरह श्री माता जी में लाया लीन होने देंगे. और इस बीच हम अपने खुले, पूरी तरह खुले हुए सहस्रार से दोनों हाथों को जैसे महसूस कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में जा रहे हैं जैसे जहां ये हाथ भी कुछ खास महसूस नहीं हो रहे, ठंडा ठंडा सिर्फ. We'll continue to dissolve this into this emptiness. Is a शून्य, शून्य में लीन हो गए. जैसे ये शून्य silence, emptiness is taking over, just like there's nothing. हाँ,
पकड़ के हमारी पूरी अस्तित्व को आप में लीन कर लीजिए माँ, as if there is we let this big silence absorb our Sahasrara Vishuddhi Anahat Nabhi. अभी अपने खुले हुए सहस्रार से दोनों हाथों को जैसे महसूस कर रहे हैं, तो बाकी की चक्र यानी विशुद्धि, अनाहत, नाभि, अपना पूरा शरीर जैसे ये गोले में मिल रहा है. You let the whole subtle system dissolve into Shri Mataji, this huge, cool sun in the form of Lord Shiva. माता जी कृपा करके हमारी पूरी अस्तित्व को आप में लीन कर लीजिए माँ. हमें जो भी लगता कि हम हैं पूरी तरह आप ही आप हो माँ. Please dissolve us to a state where it's only you. It's only you. माँ हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, आप ही हो माँ. It's all just you. आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे या अंदर का ही देखते रहेंगे. Will not open our eyes. We'll continue to enjoy the inside.
In this open Sahasrara, we'll continue to observe the both palms. ये पूरे खुले हुए सहस्रार से दोनों हाथों को महसूस करते रहेंगे ताकि अपना स्वाधिष्ठान मूलाधार भी मां में लीन हो जाए. We'll continue to observe both palms from our Sahasrara so that you let the Bhavasagara, Swadhisthana, Mooladhara chakra also dissolve into Shiva Tattva. हम पूरा छोड़ देंगे, जो भी करेगी माँ ही करेगी. We'll leave everything. Let Mother do. As we pray, Shri Mataji, please dissolve our Bhavasagara, Swadhisthana, Mooladhara chakra into you. हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, बाकी माँ करेगी, हम छोड़ देंगे पूरा. श्री माता जी कृपा करके हमारे भवसागर स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र को आप में लीन कर लीजिए माँ. हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी करेगी माँ ही करेगी, मगर हमको साइलेंटली साक्षी तत्व में देखता रहना पड़ेगा. We can only pray.
Everything is done by Shiva Tattva. We just have to be in witness. That is something that we can give. बस साक्षी भाव में देखते रहने का. Just be a witness. जैसे शिव जी साक्षी भाव में देखते रहते हैं, हम अपने आप को साक्षी भाव में देखते रहेंगे. कोई भी चक्र अगर अभी भी असंतुलन है तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और साक्षी में देखते रह सकते हैं. जो भी करेगी माँ ही करेगी. If we still have any imbalance in any chakra, we can only pray and witness. Whatever has to be done will be done by Shri Mataji. We just witness.
बस ये खुले हुए सहस्रार से दोनों हाथों को महसूस करते रहेंगे। And we'll join both our hands. दोनों हाथ जोड़ेंगे। श्री माता जी, thank you very much for this beautiful journey of cleansing ourselves with the witness state of Lord Shiva. श्री माता जी, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी, we don't have words to even thank you श्री माता जी। हमारे पास शब्द नहीं है जिससे हम आपको थैंक्स बोल सके श्री माता जी। We'll all raise our कुंडली and take बंधन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता slowly we'll raise our कुंडली, take बंधन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी थोड़ी देर बैठना है तो बैठेंगे और 7 बजे शिवबीज स्टार्ट होगा। We'll continue to stay for some time in this meditative state. At 7 we will start Shivbeat. We will need 2 chapels. आप लोग को कैसा लगा? How did you feel? I hope you people were able to follow through. जैसा चल रहा था वैसे हम ध्यान कर रहे थे। भैया। हाँ जय श्री माता जी। नमस्ते भैया। हाँ जय श्री माता जी। पहले मुझे हाथ में ठंडी हवा आ रही था, अब और सर पर नहीं आ रहा था भैया, अब आ रहा है सर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू भैया। माँ की असीम कृपा, माँ को थैंक यू। हाँ भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दीदी। बहुत अच्छा लगा, पूरा सर माथा फोरहेड तक पूरा एकदम ठंडा ठंडा हुआ, आंखें भी ठंडी हुई और राइट शोल्डर पेन था और हाँ पाम्स में ठंडा थोड़ा कम था, लेकिन फोरहेड और नेक तक पूरा ठंडा अच्छा हुआ। हार्ट पर भी आया ठंडा जो था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस माँ में लीन हो जाना है हमको, आज से पूरी तरह शिव तत्व में लीन होना है। और प्रैक्टिस करना है। स्थिति बहुत आनंद की थी, आँख खोलने का मन नहीं हो रहा था, इच्छा ही नहीं हो रहा था। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम फीलिंग वाइब्रेशन था और पूरा बॉडी पे से फिट हो गया, हिलने का मन ही नहीं हो रहा था, माता जी में लीन हो गया। बस यही है दीदी, माँ में लीन होना है आज तो पूरी तरह, माँ में लीन होना है, शिव तत्व में लीन होना है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता भैया। भैया पहले तो चित्त इधर उधर भाग रहा था जब शुरू में शुरू किया था, तो बीच में स्टेबल हो गया। भैया कई बार ऐसा भी होता है भी हम बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और बाद में एकदम से आता है भी हाँ मैं कहाँ था। अभी पूछना जैसे है, माँ आप किधर हो, आपको पूछना है श्री माता जी, कुंडली माँ आप कहाँ हो, बस यही पूछिए, देखिए कहाँ है। फिर से अगर नहीं पता चल रहा है फिर से हाथ रख के फिर से देख लीजिए। जी उस हाथ टाइम कोई विचार नहीं आता भैया, तो ऐसे फील होता है मतलब कुछ यानी कि अपने आप को भूल गए जैसे ना। अभी 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 ऐसा है कि नहीं देखना है हमको।
तभी हुआ नहीं, अभी सिर्फ आत्मा अभी है। हाथ रख के फिर से देख लीजिए, हाथ सर के ऊपर 2 इंच के ऊपर, नीचे ले आए, फिर लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर नीचे ले आए। चित उधर रह रहा है कि नहीं देखना है, कुंडली माँ उधर है कि नहीं देखना है, सिर्फ अभी अभी है। आत्मा तो अभी है, भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं, बस यही रहना हमको, यही है। आत्मा अभी है, भूतकाल है वो हम नहीं है, भविष्यकाल हम नहीं है, अभी हम है। बस यही आज प्रैक्टिस करना है, आत्मा आत्म तत्व। मुझे एक पूछना है कि अब सहस्त्रार तो बहुत ठंडा है, मदर कुंडली आप कहा हुआ जैसे आप बोलते हो, मैंने पूछा मगर कहा ये महसूस नहीं हो रहा है, कैसे और महसूस? हाँ, हाथ रख के देख लीजिए, हाथ सर के ऊपर रखिए। नहीं वो सर तो ठंडा है, वो अभी नहीं भी नहीं, मेरा ठंडा बहुत नहीं, ठंडा सर हाथ, हाँ, शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे मुझे महसूस करना है ना, फिर कैसे? हाथ हाथ रखिए, हाथ सर के ऊपर रखिए, 2 इंच ऊपर। हाँ रखा है, अभी भी रखा है। हाँ हाँ रखिए, रखिए, हवा आ रहा है कि नहीं देखिए। हाँ वो आ रहे ना, मतलब वो कहाँ हाथ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हाथ का, हवा कहाँ से? सहस्रार से, सहस्रार। हाँ, और वो पोल बन रहा है कि नहीं, पोल बन रहा है, पोल बन रहा है कि नहीं, सुषुम्ना बन रहा है कि नहीं? वो मुझे नहीं समझ में आ नहीं आ रहा है ना। आप अभी अभी जो है ना, राइट हैंड नीचे ले आइए, फिर लेफ्ट हैंड सर के ऊपर रखिए। रहा। रखा है अभी। हाँ, फिर से 2 मिनट वैसे रखे रहिए, फिर थोड़ी देर बाद लेफ्ट हैंड नीचे ले आइए, फिर राइट हैंड 2 मिनट के ऊपर रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। सहस्रार में तो मालूम हो रहा है ना। नहीं नहीं, वही हो जाएगा। अब मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप जो महसूस छोड़ कर दीजिए, रहे हैं ना वो मुझे छोड़ करना दीजिए, है। छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, बातें नहीं। हाँ ठीक है। माँ को शांति अच्छा लगता है, साइलेंस। जी जी। प्रार्थना किया भाई, इंतजार करना है साक्षी भाव से, प्रार्थना करिए ना। लेफ्ट हैंड नीचे मत लाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर ही रखिए, लेफ्ट हैंड बिल्कुल नीचे ले आइए, ऊपर रखना है, नहीं तो विशुद्धि नहीं खुलेगा, विराट नहीं खुलेगा। हाथ को इस्तेमाल करना है, ललित चक्र, श्री चक्र इस्तेमाल करना है। हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुला, ये लेफ्ट हैंड आपको ऊपर रखना है, वो नीचे नहीं लाना, बिल्कुल ऊपर नीचे मत लाइए। जय माता जी भैया, हाँ जयश्री दीदी, मतलब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर लाए बगैर ये लेफ्ट विशुद्धि नहीं खुलता क्या? मेरा लेफ्ट विशुद्धि का थोड़ा ये है हाँ, प्रॉब्लम। अल्लाह अकबर सुबह शाम करना है, वो करते ओके रहिए। अभी तो आत्म तत्व प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी देर, आज पूरा दिन। ये ओके डिस्कशन सब बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम, वो तो रोज करते रहते हैं। आज तो पूरा राइट आत्म तत्व का दिन है, बस हाथ इस्तेमाल करके, हाथ इस्तेमाल करेंगे तो श्री चक्र, ललित चक्र, विशुद्धि पूरा इस्तेमाल होगा और विराट में जुड़ेंगे। हाथ इस्तेमाल करना है। ओके। जय श्री माता जी भैया। जय श्री अभी हम आँख जैसे एक वो बंद होते तो एक होल जैसा दिखता है, उसमें एक फ्लेम जैसे रेड कलर का दिखता है, कभी ब्लू कलर दिखता है उसमें। हाँ, वो बस आग्नेय चक्र, हाथ आग्नेय चक्र पे रख के वो साइलेंस कर लीजिए, पूरा पूरा साइलेंस, और साइलेंस, और साइलेंस। ओके। पद्मा दीदी है कि नहीं? आप आईपैड, जिसका नाम आईपैड है, आप लेफ्ट हैंड रखिए, आपका राइट हैंड तो ठीक है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखिए आप ज्यादा। हाँ मैंने रखा। हाँ वही करिए, वही करिए, लेफ्ट लेफ्ट क्लियर होना है ज्यादा, खुल जाएगा। भैया मेरा लेफ्ट विशुद्धि कैसे लग रहा है आपको? नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं लग रहा, आप अपने आनंद में रहिए बस। किसी को कुछ करना नहीं है अभी तो। पद्मा दीदी कहाँ चली गई है कि नहीं देख रहा हूँ, हाँ आ गई। जय श्री माता जी। जय शिव जी। Jai Shri Mataji Bhaiya, the oneness, completely oneness with Shri Mataji. A great, we are just dissolved into the Son of Shri Mataji's love. यस यस, Right. We just become we were completely dissolved into the Sun. Probably all the chakras from above to down, right?
Yes, Wonderful. yes. Wonderful, yeah. Wonderful experience. Maat Jai Jason Shri को Mataji. Yeah, जय great. It's a kripa to Shri Mataji. Thank you, Shri Mataji. श्री Jai चलिए Shri. हाँ हाँ विल गेट रेडी और हाँ जय श्री माता जी भैया नमस्ते जय श्री भैया। माताजी। पद्मा दीदी आ गई है हम जय श्री पूरा शुभित सेशन के बाद बात करेंगे ठीक है जय जय श्री श्री माता माता जी। भैया भैया 1 मिनट भैया। नहीं नहीं बाद में दीदी सब लोग रेडी है भैया शुभित के लिए आईपैड कैसे क्यों यूज सकते हैं? नहीं आईपैड कुछ नहीं है दीदी आईपैड किसी का नाम था वो ठीक है iPad? चलिए डोंट वरी यार जय श्री माताजी टू ऑल। जय श्री माता जी। जय श्री माताजी। थैंक यू राम भैया। बहुत समय के बाद बहुत लंबा मेडिटेशन। बहुत मेरे को पता नहीं चला हाँ, दीदी एंजॉयड लॉट। कैरलिंग और शूफी तो आप फुटसोक तो भूल ही गया मैं सब कुछ हो गया उसी में। मैं सोच रही थी ये शूबिट भी सुनना कर लेते हो। जय श्री माता दी, जय श्री। जय श्री माता। Really wonderful meditation. I wanted to thank you, but I joined through YouTube. That's why मुझे उधर Yeah. बात करना नहीं हो रहा था, तो इसलिए Even मैं all इधर बोल रही cleansing हूँ। done here. Yeah, really. It's all cleansing Yes, done. yes. But But for it Bhavasagara, did disconnect though. YouTube disconnected for me, yes. Why? No. right? It was not disconnected. It was It was still disconnected end. for It me. I was don't working. know. Maybe Oh, yeah. maybe I must have touched something. I didn't even realize it was disconnected. It got disconnected. No. That's why I came on the Zoom. I came home No. and I came. The whole Till time I end it was was working. outside. Yeah, I was Okay. outside the whole time. So I just joined. But the talk was beautiful. Oh my goodness. I've never seen that talk. Yes. okay now Okay. it's Anyhow, time to Shiva drop our Puja. ego Anyhow, Shiva Puja started very nicely. Okay, before puja, we have to cleanse ourselves. Whatever there in minute form within us, it will be there. So let us do that through shoe beating. Anyhow, wonderful morning. Really, I'm very joyous. Thanks to very much, Rambaya. Okay, let us take our hands towards sky. आकाश देवता, आज तो हम बहुत आनंद से और भी आनंद में डूबे रहने के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए। हे आकाश देवता, प्लीज ब्लेस अस विथ स्काई एलिमेंट, ईथर एलिमेंट, आकाश तत्व। Let us observe. Anyhow, we are cool today. Sahasrara and fingers. After each and every prayer, you have to observe the blessings, differences before prayer and after prayer. What is the differences in the vibrations? We have to watch this. We have to make this habit. हे आकाश देवता, शिव तत्व में पूर्ण रूप से डूबे रहने के लिए आपकी सहायता बहुत आवश्यक है। उसके बिना नहीं होगा। कृपा कर हम सब के ऊपर आपके आशीर्वाद बरसाइए।
Now let us chant Allahu Akbar 16 times. After chanting one time, we remove fingers. We chant 16 times. Let us Allahu Akbar. While chanting, we have to lift our throat fully and face towards sky with open eyes. We chant Allahu Akbar. Let us start. Allahu Akbar. अल्लाह अकबर बोलेंगे 16 बार. कानों में फिंगर रख के, उंगलियां रख के बोलेंगे विशुद्धि फिंगर. एक बार बोलने के बाद निकाल के फिर रख के 16 बार बोलेंगे. गला पूरा ऊपर उठाया हुआ, फेस चेहरा आकाश की तरफ, खुली आंखों के साथ हम अल्लाह अकबर बोलेंगे. अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर. साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. दोनों हाथों को फिर से आकाश की तरफ लेंगे. महसूस करें. Let us take both hands towards sky. Once again, let us feel the vibrations. Enjoy these vibrations from Sahasrara. Let us join our hands, fold our hands and bow down to Akash Devta. Thank you Akash Devta. धन्यवाद आकाश देवता, आपने हमको आकाश तत्व प्रदान किया. दीदी can't hear. दीदी वॉल्यूम थोड़ा बड़ा करो. Hey Akash Devta, are you listening? Are you hearing now? Hey Akash Devta. जय श्री माता जी. पद्मा का केनु जो चूरला ಹೌದಾನಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಉಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ರಾಮಯ್ಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಾನು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಇರೋರು ಲಾಗೌಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು. जयश्मा दीदी क्या वॉल्यूम कम हो रहा है क्या? हाँ, दीदी का वॉल्यूम, दीदी का वॉल्यूम कम है क्या? यस यस. नहीं, उन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं लॉग आउट हो जाओ फिर से लॉग इन हो. हमें भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है. बातचीत तो फर्स्ट रूप है माता जी. जय श्री माता जी. जय श्री ओके, लॉग आउट होके नहीं लॉग आउट नहीं कीजिए. I think you have removed that Bluetooth. I think earlier when we were chanting Allahu Akbar. It is there. It is a signal is also there. It is showing that it is connected.
It is showing here. It is connected. logger मल्पलेगे Rambaya, what can I do? No sound. नहीं, I am able to hear. If you are asking, I am answering. That means I am able to hear you, na Didi. Everybody is saying, and the message is also there. I can hear now you. okay I now can hear okay you. now okay Now we are okay. able to hear, Didi. We are able to hear Didi. Now we are otherwise, it is becoming low. Didi, now we are hearing. Okay. But while doing the meditation, it is not hearing. Okay. Doing meditation, no talking. Not to अभी hear फिर से something. लो हो गया. फिर से लो हो गया. यशवंत, लेकिन समझ तो सब आ रहा है दीदी. यशवंत. Anyhow, today we are going to do 2 rounds of Shubhi. One for our Bhavasagara. Today and tomorrow, 2 days pujas. So we have to cleanse our Bhavasagara. Aguru Kugurus. And personal. No, nothing to say. Are you hearing, everyone? Today we are going to do 2 rounds. One for Bhavasagara, Aguru Kugurus. We have to fill the circle. And second one is for personal. Then also we have to fill up the circle. I won't say anything. You can, every day you are doing Shubit. So when you are, you can see in menu in your screen. So you can, while seeing, you can do that if you are not listening. Because I don't know, from my inside it is clear. You see your network. दीदी आवाज आ रही है लेकिन बहुत लो वॉल्यूम में आ रही है. हाँ, वो पता नहीं है, मेरे मोबाइल में फुल दिखा रहे. ठीक है, मैं तो जोर से बोलूंगी. मैं ऊपर बैठी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो पूरा सराउंडिंग वालों को भी सुनना ही देगा मैं जो बोल रही हूँ. कोई भी बात नहीं. जो अपन हेडफोन ला दो आवाज आ जाए थोड़ी. ले जाओ जल्दी लाओ, नहीं शुरू हो जाई है. ये ले गए जल्दी लाओ, इसे सुनाई कम दे रहा है. म्यूट कर दीजिए ना, आप म्यूट कर दीजिए. सॉरी दीदी. ओके, हम अब चित्त सहस्रार में लाएंगे. दोनों हाथों में महसूस करेंगे और बंधन लेंगे. हम कनेक्ट हो जाएंगे सहस्रार से. सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान करके, आज सहस्रार से ऊपर है. हम ऊपर से ही एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे. हम नीचे नहीं लाएंगे. हम सब ऊपर है. आज तो बहुत ऊपर है, तो हम उधर से कनेक्ट हो जाएंगे. सब कुछ सहस्रार से सुनेंगे अभी. Yes. Now let us take बंधन. बंधन लेंगे. आज हम बात कम करेंगे, सहस्रार में रहते हुए कार्य करेंगे. कवच स्लोली. अब हम इस जगह को शुद्ध करेंगे, चैतन्यमय बना दें. लेट अस वाइब्रेट दिस प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू डू शुभ. Attention above Sahasrara. बंधन देंगे. Let us vibrate once again.
लेट अस सीक परमिशन मांगेंगे, अनुमति। हे श्री गणेशा, कृपा कर हमें सामूहिकता में शुभ करने की अनुमति प्रदान कीजिए और समस्त विघ्नों को दूर करने की कृपा कीजिए। हे आदि भूमि माता, कृपा कर हमें क्षमा कीजिए और सामूहिकता में हमें शुभ करने की अनुमति प्रदान कीजिए और समस्त बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री गणेशा, please permit us to do Shubit, collective Shubit, and please remove all the vignas. Hey Adi Bhumi Mata, please forgive us and permit us to do collective Shubit, and please remove all the badhas. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सर्व करता है, कृपा कर हम सब से सामूहिकता में शुभित करा के लेने की कृपा कीजिए और हम सबको शुद्ध करने की, पवित्र करने की कृपा कीजिए श्री माता जी। पूर्ण निर्विचारिता में, सुषुम्ना में हम सब लपटे गए हैं अभी। We are all inside Sushumna now. Very nicely formed. Let us be within Sushumna throughout the process. हम पूर्ण कार्य होने तक यही तरह रहेंगे, निर्विचारिता में सुषुम्ना के अंदर ही रहेंगे, ताकि जो कुछ भी हम बाधा अभी मारने जा रहे हैं सहस्रार से पूरा बाहर जाए हमारे अंदर से। Let us fold our hands and do pranamas to Bhumi Mata. अब हम once again let us flow some vibrations here and put one circle with Vishuddhi finger. This is the round for Agurus and Kugurus, whom we are followed earlier, and now also our family members are following, and all those Ashuddha Vidya practitioners in our family, and the badhas which is affecting us, our ascent. आज हम अगुरु कुगुरुओं के लिए शुभित करेंगे, जिसके कारण हमारे भवसागर में पार होने की, धर्म स्थापना होने की आड़ आ रही है। जो शिव तत्व में स्थापित होने के लिए भवसागर का क्लेंस होना बहुत जरूरी है। तो हम जिसको पहले फॉलो कर रहे थे सजग में आने के बाद, और अभी भी हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, और हमारे परिवार के सदस्य आज भी उसके किसी का फॉलो कर रहे हैं, उसके कारण भी हम भवसागर में पकड़े हुए हैं। तो हम शिव पूजा के लिए आज और कल 2 दिन भी यही टॉपिक में करेंगे, अगुरु कुगुरुस एंड फॉर पर्सनल। तो आज हम यही अगुरु कुगुरुओं के लिए, हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में अड़ाने वाले अगुरु कुगुरुओं के लिए करेंगे। और हमारे परिवार में अगर कोई अशुद्ध विद्या प्रैक्टिस करता है उसको भी हम करेंगे। बट एट द एंड हम लिखेंगे ऑल भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या, स्मशान विद्या, मुसलमान विद्या practitioners in the world. At the end we write on that line. Now you have to fill up yourself this circle. इस सर्कल को आपको खुद को फिल अप करना है। अंत में हम सभी प्रकार के भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या, स्मशान विद्या, मुसलमान विद्या प्रैक्टिशनर्स दुनिया के, इन सब के लिए एक लाइन लास्ट में लिखेंगे। अभी आपको खुद को इसको फिल अप करना है। लेट अस फिल दिस सर्कल ourselves. We're doing our own, na? Our own. Yes, you have to do your own.
दीदी बोलते नहीं जी लिखते समय। हाँ आपको खुद को लिखना है। मैं बोलूंगी तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम है। आपका जिस गुरु का आपने फॉलो किया अलग है, मैं जो किया है अलग है, राम भैया के अलग है, जो जो इतना लोग है अलग अलग है, तो एक ही बोलेंगे तो नहीं होगा। आप पर्सनल के लिए कर दीदी रहे हैं। हाँ दीदी। दीदी सबसे पहले गुरु और अगुरु अलग करना लिखना है। हाँ हाँ यस। दीदी उसमें अपना नाम भी लगता है कि मतलब हमारे ऊपर नहीं, अगर नेक्स्ट राउंड में हम लाएंगे, नेक्स्ट टाइम में हमारे अपना नाम, आत्मोन्नति के मार्ग में। हाँ मतलब दीदी अपना नाम लिख के बोलना है ना कि हमारे आज मेरा नाम है हाँ, हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले इन सभी गुरुओं के अड़चने और बाधाएं, एट द एंड भी इनके कारण मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले आड़ और बाधाएं, ये भी ऐसे भी एंड कर सकते हैं अगर आप शुरू में नहीं लिखा है। हम उन लोगों को नाम याद करते समय सब चित्त सहस्रार से नीचे नहीं आएंगे। पूर्ण निर्विचारिता में हमको ये करना है। अगर हो गया तो हम बंधन देंगे चैतन्य से। चित्त सहस्रार के ऊपर रहते हुए हम बंधन देंगे। अटेंशन ऑन फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस। हाथों के हिलाने के ऊपर नहीं, उंगलियों से बहते हुए चैतन्य के ऊपर हमारे नजर को हम अटेंशन को रखेंगे। इसको श्री माता जी के हवाले करेंगे। लेट अस सरेंडर इट लोटस फीट ऑफ श्री माता जी। You can pray here whatever you want in your, with your emotions and in your language. आपके भाषा में और आपके भावनाओं के साथ इधर आप प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी कृपा कर हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले इन सब के प्रभाव को कृपा कर दूर कीजिए। हमें शिव तत्व में लीन होने की इच्छा है श्री माता जी, ये सभी बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए। Now let us take our left chapel. Actually 2 rounds also today we wrote at the end. हमारे माध्योत्मनति के, तो today we are going to take 2 rounds with right chapel only. Today we are going to take right chapel ही लेंगे, क्योंकि हमने इधर लिखा है हमारे इन लोगों के कारण मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी अड़चने और बाधाएं, ये हमारा भावसागर के लिए हम खुद कर रहे हैं, तो इसलिए हम राइट चप्पल लेंगे। दोनों राउंड में आज राइट चप्पल रहेगा। We have written because of all this the obstacle in my ascent at the end or in the beginning. So this is my personal problem. I want to remove from my system. So today we do this round with right chapel. दीदी राइट चप्पल और लेफ्ट चप्पल? Right chapel, right chapel, right chapel. Okay, looking towards sky, observing your Sahasrara and left palm, being in thoughtlessness, slowly respecting Mother Earth, we should it today. आकाश के तरफ देखते हुए हमेशा की तरह सहस्रार को और लेफ्ट पाम को महसूस करते हुए निर्विचारिता में रहते हुए हम हल्के हाथों से शुभ इट करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ।
इधर भी आप प्रार्थना कर सकते हो. You can pray here also in your heart to remove the obstacles. प्रार्थना में भावना होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अपने भावनाओं के साथ अपने भाषा में आप प्रार्थना कीजिए तो इफेक्टिव ज्यादा रहेगा. Emotions are very important, have very important role in prayers. So with your emotions and in your language you pray, it gets very quick effect. जो नेक्टर अंदर आ रही है इसको हम भवसागर में आज फिल करेंगे. Let us fill our Bhavasagara with the nectar flowing in from Vishuddhi. Let us divert some portion to right hand also. I'm feeling on the Bhavasagara, on the palm, not in the area. Let us continue for 2 more minutes. भवसागर अच्छे से ऊपर से ठंडा होते 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 नीचे जा रहा है. स्वादिष्टान तक पूरा ठंडा होने देंगे. Bhavasagara upper portion is very nicely cool. Let us cool up to Swadhisthana whole Bhavasagara. Nabi is also cool. Swadhisthana is also getting cool. Now let us stop. स्वादिष्टान तक हमारा कुल चले गया है. भवसागर पूरा ठंडा हो गया है. वैसे आज ध्यान का भी प्रभाव बहुत अच्छा है, तो हम अभी रुकेंगे. Let us collect this, looking towards sky and throw towards sky. आकाश की तरफ देखते हुए इसको इकट्ठा करेंगे और इसको आकाश की तरफ उड़ाएंगे. Once again, let us cool down. Cleanse this area.
गिव बंधन। ये पर्सनल राउंड रहेगा, ये पर्सनल राउंड है। लेट अस पुट वन सर्कल, एक सर्कल डालेंगे विशुद्धि फिंगर से, अपना अपना नाम लिखेंगे। अहंकार, प्रति अहंकार, अहम भाव, कर्ता भाव, श्रेष्ठता का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता का भाव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, अगुरु और कुगुरु के प्रॉब्लम हमने शुभ किए हैं, फिर भी एक बार इधर लिखेंगे। अटेंशन, बैड अटेंशन, पुअर अटेंशन। श्री माता जी, जय श्री माता जी। हमारे यहाँ बहुत 10 साल से एक एडवोकेट होता है ना, उन्होंने हमें बहुत हैरेसमेंट करते हैं। ज्यादा जल्दी जो रिजल्ट आता है ना, वो करने के लिए बहुत अड़थड़े लाने हैं। इसलिए सामूहिकता में मैं शुभ मीटिंग करना चाहती हूँ उनके नाम से। आप उनका नाम लिखिए, उनका बैड अटेंशन ऑन मी, बैड अटेंशन ऑफ अदर्स ऑन मी है, उसका नाम लिख के उसका बैड अटेंशन ऑन मी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आज मुझे पूजा में जाना है 10:30 बजे से, और कल सेंटर में जाना है, कल 40 किलोमीटर जाना है, तो हम 3rd राउंड में नहीं जाएंगे, आज 2 ही राउंड में खत्म करने वाले। चलता है। और मेरा बार बार रिपीटेडली उनके ऊपर जाने वाला चित्त, आपका चित्त के लिए भी लिखिए, क्योंकि हमारा चित्त जा जाके किसी से नेगेटिव लाता है, उनके कारण ही हमको नहीं आता है, हमारे कारण ही हमको ज्यादा आता है, उसको भी हम लिख सकते हैं। रिपीटेडली मूविंग, हाँ लिखेंगे, रिपीटेडली मूविंग माय अटेंशन ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। इफ यू हैव एनी नेम यू कैन राइट। All types of six subtle enemies, kama, krodha, lobha, moha, mada, मात्सर्य, इतना हम सबको लिखना है। उसके बाद हम अगर कुछ इंट्रोस्पेक्शन में पाए वो लिख सकते हैं। Hereafter you can write your own what you get in your introspection. नेगेटिव विचार, qualities, हाँ लिखिए। भूतकाल के विचार बाद ज्यादा आता है तो मुझे सताने वाले भूतकाल के विचार हैं। अगर फ्यूचरिस्टिक थॉट्स बहुत आते हैं, मुझे सताने वाले भविष्य के चिंताएं, लिख सकते हैं कुछ भी। There is a program, realization program tomorrow. Not realization program, it's a fair. It's a fair. So I'm writing it. If anybody else write about, problems with that. No, here for the realization. we cannot, you can write that Separately, okay. Your participation in that fair. Okay. All right. Otherwise you have to do 3rd round yourself. इधर आप हम लिखेंगे, अगर हमारे अंदर राक्षसी वृत्ति, रिएक्शंस ज्यादा आता है तो रिएक्शंस, मेरे अंदर की राक्षसी वृत्ति और प्रवृत्तियां, हमारे अंदर अगर माइन्यूट प्रॉब्लम, इसमें भी कनिंगनेस है या व्यामोह है, लस्ट है, तो लस्ट लिख सकते हैं। अपवित्रता अभी भी मेरे अंदर है, नजरों में, कार्यों में, कर्मों में, जो कुछ भी वो लिख सकते हैं। अशुद्ध विद्या, मेरे अंदर की सभी प्रकार की अशुद्ध विद्याएं हैं जो कलेक्ट करके रखा हुआ है पहले से। अशुद्ध इच्छा है, अगर मेरे मन में बुरे विचारे, बुरे इच्छाएं आते हैं, बहुत सारे फोन आता है मुझे, तो लिख लीजिए। बैड डिजायर्स, इम्प्योर डिजायर्स। और हमें अभी भी कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास नहीं है सहयोगा में या श्री माता जी में, मेरे अंदर की विश्वास की कमी। Till we are not having full faith in Shri Mataji, so that is our problem. So let us write अभक्ति, अश्रद्धा, असमर्पणा मनोभाव, साक्षी भाव की कमी, विटनेस की कमी,
लैकिंग इन विटनेस स्टेट, माधुर्य की कमी, झगड़ालू स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो उसको लिखेंगे, क्षमाशीलता की कमी, समग्रता की कमी, जो कुछ भी है, और मानसिक दैहिक भावनात्मक समस्याएं, अगर आपके फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरे परिवार से आने वाले समस्याएं, सोशल मूवमेंट में है तो सोशल समाज से आने वाले समस्याएं, एट द एंड हो गया तो एट द एंड लेट अस राइट ऑल माइन्यूट प्रॉब्लम्स इन द पाथ ऑफ माय एसेंट, मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आ डालने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं, एट द एंड में लिख लीजिएगा और इसको बंधन देंगे। लेट अस गिव बंधन। लेट अस सरेंडर, इसको समर्पण करेंगे श्री माता जी के चरणों में, प्रार्थना करेंगे हमारे भावना के साथ हमारे भाषा में। श्री माता जी कृपा कर मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले इन सभी प्रकार के अड़चनों को दूर कीजिए, मुझे शुद्ध होने दीजिए। Let us pray in our emotions in our language, make it effective. तो फिर से राइट हैंड चप्पल, राइट लेग चप्पल, लेट अस गिव बंधन वंस अगेन। राइट वाला चप्पल लेंगे, फिर से बंधन देंगे। As usual, looking towards sky, observing our Sahasrara and left palm. Slowly we should be. हमेशा की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए सहस्रार और लेफ्ट हैंड को महसूस करते हुए हल्के हाथों से हम शुभित करेंगे। लेट अस स्टार्ट। While shubhiting also you can pray in your heart with Shri Mataji, with your emotions. शुभित करते समय भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। चैतन्य जो अंदर आ रहा है इसको सब कीजिए और जाने दीजिए कहाँ पर। श्री माता जी, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। आपका वीडियो बंद है क्या दीदी? हमको स्क्रीन की दिखता है बेटा, दिखता है। और स्क्रीन की जरूरत नहीं है, मैं आगे से वीडियो बंद करके शुरू कराने वाली। स्क्रीन की जरूरत नहीं है। शुभित करते समय हमको देखना नहीं है ना, इसलिए स्क्रीन की क्या जरूरत है। आकाश की तरफ देखते हुए शुभित करेंगे। There's somebody who has a phone open, microphone is open, and we can hear their shoe beating.
बहुत अच्छे से पूर्ण सहस्रार, पूर्ण पीठ, एकादश रुद्र, कानों में से भी पूर्ण तरीके से चैतन्य फ्लो हो रही है। 1 मिनट करेंगे और रुकेंगे हम। हम रुकेंगे। बहुत अच्छे से, वैसे आज चैतन्य स्व मेडिटेशन में पूरा क्लियरेंस हुआ था। अब हम इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ फेंकें। Let us collect this and throw towards sky. Now let us clean this place with vibrations nicely. हम बहुत अच्छे से इस जगह को शुद्ध करेंगे चैतन्य से। बंधन देंगे। चैतन्य के बंधन होना चाहिए, सिर्फ हाथों को नहीं हिलाना है। अगर कोई घर के अंदर कर रहे हैं तो हम गणेश मंत्र भी लेंगे। If anybody is doing Shubit from inside house, better to take Ganesh mantra. Now let us take Ganesh mantra. Om Tomeva Saksha, Shri Ganesh Saksha, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi, Namo Namah. हे श्री गणेशा, कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित करने की कृपा कीजिए। Please establish Shri Ganesha Tattva in this place. बहुत जोरों से देखिए, सहस्रार दोनों हाथों के कैसे फ्लो हो रही है, बहुत अच्छे से। Now let us clean this place. Chappals also. Give bandhan. Let us give some vibrations also. Now let us clean our hands with vibrations, giving bandhan. अभी थैंक्स बोलेंगे। हे श्री गणेश, हे आदि भूमि माता, आपने हमसे सामूहिकता में शुभित करा के हमें शुद्ध करने की कृपा किया, समस्त विघ्नों को दूर करने की कृपा किया। थैंक यू श्रीमती जी, थैंक यू आदि भूमि माता, थैंक यू श्री गणेश। श्रीमती जी, आपके चरणों में हमारे प्रणाम। कृपा कर श्री गणेश स्वरूप में, आदि भूमि माता स्वरूपा में और हमारी माँ के स्वरूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। Let us join our hands and to pranamas. If anybody want to move, you can move. After taking bandhan, bandhan लेंगे। हमारे नाड़ी में कुंडली माँ ऊपर आते आते हमको महसूस करना है। कवच धीरे से
वाइब्रेशंस के ऊपर रखते हुए हम धीरे से कवच लेंगे. Let us take कवच, keeping our attention on vibrations. Slowly. Thank you, श्रीमती जी. अब हम आकाश की तरफ हाथ लेंगे. Let us take our hands towards sky. हे आकाश देवता, कृपा कर हमें शुद्ध कीजिए. Please cleanse our hands, आकाश देवता. हे आकाश देवता, कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाले परम चैतन्य को स्वीकार कीजिए और समस्त एरिया में, पूर्ण विश्व में फैलाने की कृपा कीजिए. समस्त साधकों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए. हे आकाश देवता, please receive the vibrations flowing through us and spread it all over the area and all over the world. Please take it up to the sadhakas, each and every satya shodhakas. Who are searching for truth. महसूस कीजिए आज इतना लंबा ध्यान के कारण नेक्टर अपने आप अंदर फ्लो हो रही है. हमको सांस अंदर लेना छोड़ना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आज पूरे ब्रह्मरंध्र से सुषुम्ना में चैतन्य अंदर आ रही है. After today's wonderful meditation, nectar is flowing automatically inward from Brahmarandra without any effort. But my, your dogs are not too happy being locked up. I'm in upstairs, Didi. ये आकाश तत्व हम क्लाउड वाइब्रेट कर रहे हैं. हमने 1 महीने पहले एक बीओ मीटिंग में गए थे. स्कूल टीचर्स की मीटिंग था. उधर बोल के आए थे सहयोग के बारे में. तो स्कूल का टीचर्स का अपने आप अभी फोन आ रहा है और हमको हमारे गांव में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का मेला हो रहा है
fair, Krishi Mela, is going to happen 3rd, 4th and 5th March in our area, in our village itself. So we are also got one stall there, and we are trying for one stage program also. Because of Srimataji's blessings and this cloud vibration, it is going to happen. Thanks to Srimataji and Akash Devta. What is going to happen because of the cloud vibration? Krishi Mela, one fair, agriculture fair is going to happen on 3rd, 4th and 5th March. We have got stall there, like you have tomorrow, no? One fair is there in your area, like, yes. We got one stall there and one stage program also we are going to get, I think. हम आदत बनाएंगे, सहयोग में हर चीज को हमको आदत बनाना पड़ता है। चित्त को संसार में रखना, हर कार्य ऐसे आत्म तत्व में रहना, ऐसे आदत बनेगा तो फिर हम आदत में डूबे जाएंगे, चैतन्य में डूबे जाएंगे। ऐसे क्लाउड वाइब्रेशन करना भी हम आदत में डालेंगे। Whenever we get time, we let us make this habit vibrating the clouds minimum half an hour a day. It cleanses us also along with vibrating our area. Thanks to Akash Devata. Thank you Akash Devata. हम आदत डालेंगे, इससे हमारा भी शुद्ध होगा और पूर्ण एरिया में चैतन्य भी बहेगा। हमको जो बाहर से तकलीफ आते हैं वो कम हो जाएगा। दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता। थैंक यू श्री माता जी, आपने हम सबको इकट्ठा करके हमसे कार्य करा के लिया, प्रेम को आपस में एक्सचेंज करवाया। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। रुकेंगे। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हैव ए निर्मल डे टू ऑल। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अक्का। जय श्री माता जी। 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 दीदी जय श्री माता जी। आपने उस दिन पूछा था ना दीदी, आप उस दिन पूछ रहे थे कि शुभीट से फायदा हो रहा है कि नहीं। Can you hear दीदी? हाँ, उसी दिन दीदी, when I was शुभीटिंग and I was शुभीटिंग for myself, गुरु कुगुरु की बाधाएं, तो at the same time मेरे हस्बैंड बैडमिंटन कोर्ट में थे, तो उन्होंने मुझे बताया that he was feeling vibration from the Sahasrara gate. Thanks to So I just who was feeling the vibrations? for others. Who was feeling the vibrations in the badminton court? Actually, Auntie, my husband also does yoga, but he doesn't do the clearing techniques and all. But he also follows someone else. So when I was shubhiting here for myself, Aguru Kuguru ki Badhaएं, at the same time he was feeling vibrations in his badminton court. Wonderful, wonderful, isn't it? Wonderful, wonderful. He was getting cleared. That's great. And that day only, Padma Aunty had asked to share her experiences. Thanks to Shri Mataji. Here or in Virat. So, दीदी आज आवाज सही नहीं आ रही थी,
And today also I wanted to join Shubit, but मैं थोड़ा बेटे के lunch में late थी. So I was praying to Shri Mataji थोड़ा time late हो जाए, and it started late. There was some today 7 o'clock timing, no? Saturday, Sunday, 7 o'clock. there was some sound problem, no, today. So then I could I join don't at know, time. because of Microsoft टावर का कुछ प्रॉब्लम है ना, उन लोगों का सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, शायद उसका कारण होगा. माइक्रोसॉफ्ट वालों का कुछ प्रॉब्लम है. ये लोग किसका यूज करते हैं पता नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट टावर इज अंडर प्रॉब्लम. ओके. नहीं, मैं 5 मिनट लेट थी दीदी, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया. I could reach on time. Yes. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. श्री माता जी was waiting for you maybe. Okay, जय श्री माता जी. जय श्री माता जी to all. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. Padma, you're glowing.